Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, today we are going to start unit number 5 of your Social 5 books. And the name of our unit is Geography. We are going to start with the first part, that is about the maps and the bolts. So my dear students, today is the introduction of this unit. So my dear students, let's get started. So my dear students, in this unit you will study physical geography. This comprises of 4 parts. First part is about globe, maps and skills. Need to identify locations and maps or globe through grid referencing. The second part consists of physical regions of Pakistan and their characteristics. The third part comprises of interaction between land and people, including climate change and its impact on human life. In the last part, you will study dynamics of population. So, my dear students, basically geography को हमने 4 parts में divide किया है और हर part को हम in detail पढ़ेंगे. कुछ उनके student learning outcomes होंगे और उनको हर किसी को हम जो है बाय द एंड हर पार्ट के खत्म होने पर हम उनको रिव्यू भी करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको एक दफ़ा पूरा जो जितने भी 4 पार्ट्स हैं उनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इज अबाउट ग्लोब एंड मैप स्किल्स एंड दीज आर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दैट विल बी अंडरस्टूड. इसमें आपको बोल्ड्स के बारे में, मैप स्किल्स के बारे में, ग्रिड रेफरेंसिंग के बारे में बताया जाएगा. द लेक्चर्स दैट आर इंक्लूडेड आर 1 till 8. 8th lecture would be the review. Then we will move forward towards part number 2, and the part number 2 is about physical regions of Pakistan. इसमें आप मुख्तलिफ जो regions हैं पाकिस्तान के, कुछ elevated है, कुछ sea level पर है, इन तमाम regions को हम detail से पढ़ेंगे और उनके physical characteristics को भी आप ध्यान में रखेंगे. So my dear students, the lectures that are included in this part are 9 till 18, and the 18th lecture will be the review of this part. Then in lecture number 3, we will discuss about weather and climate and the impact of human on the natural environment और किस तरीके से interact कर रहे हैं, क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं इंसानों के मुख्तलिफ activities के. We will discuss that all. The lectures that are included are lecture number 19 till 25, and the 25th lecture will be the review of this part. Then in lecture number 4, we will discuss about population. किस तरीके से आबादी जो है वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर डिवाइडेड है. आप ग्रेड 4 में काफ़ी हद तक इन चीज़ों को ज्योग्राफी में कवर कर चुके हैं. फर्दर हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द लेक्चर दैट विल बी इंक्लूडेड आर लेक्चर नंबर 26 till 29, and 29th lecture will be the review of part 4. So my dear students, these are the 4 parts into which we have divided this unit. 1, 2, 3 and 4, और उसमें हम डिफरेंट चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 1 and its first lecture. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.